Okay, so in last session we have talked about the concept of what is project, what is you can say what is the class in Java, what is package in Java, and everything we have captured on the video. So if somebody have missed, they can go through the video. Now, as usually the way of our teaching is that in every next session we are going to discuss the queries about the first session. So anybody have any doubt, you can ask me. Okay, anybody? What is related to the package, related to the class, related to the object? Then we proceed to the next topic. Anybody? No, sir. Everybody is good? No. Yeah, nothing from my side. All right. So two things can be happen. Maybe the persons have not revised one thing, and this is the, you can say, negative aspect I'm just thinking, and the positive aspect that I'm really teaching well. Everybody is getting this thing, everything from the session. Okay. So I'm taking the positive thing. Okay. So let me make a recap on that. So we have seen that whenever we designed a class, what things come into the class, two things actually comes into the class, and indirectly you can say in a class only two things will are possible, and using those three things we try to design a class. One is properties and one is functions. So we have discussed about the properties. So for example, in student class we have properties: student roll number, student name, and student school name. Now I also told about this thing that whenever you are designing a class, try to make this best practice, that don't try to create the main function within the class. Because somebody asked me this question in the WhatsApp group, that Pradeep, can we create the main function within the same class? Yes, we can do. You can see here, I'm going to write this same code which I have written in the some another class. I can write in the same class also. You can see here, it is giving any error? No. No. And you will see I'm going to write everything error. Like last time I've shown you that in this main function I've created two objects of the student class. This one you can see, student 1 and student 2. Is it okay? Now we have assigned the values for the two objects. For S1 we have assigned student roll number, student name, student school name, and same way we have assigned the values for the student 2. Now I can show you that if you want to assign some value, you have to write the code reference S1 roll number equal to, and when you want to read some value, you have to simply write S1 then the name of the property. And you can see here, I'm going to print it here, S1 roll number. Okay, so we will discuss about the SOP function also, that what is SOP function. And if you want to learn SOP function before my, you can say before in your regular session, you can go through the videos also that is available on YouTube. S1, it is S1 name, or you can say S1 student name. Okay, now I will write S1 school name. So today I'm going to tell you very interesting thing. S1 dot stu name, stu dot school name. So this values I'm going to print for S1. Same thing I can print for S2 also. Okay, Gulam, if you are not getting, don't worry about that. Okay. Okay. Okay, you can just go through the first session, and if you have a doubt, you can come to me, and I will tell you about the you can say your doubts. Okay, because the thing is that the second session, don't worry, nothing is left for you. Sure. Thank you. Okay, S1, S2, and here I'm going to S2. Now you see, I'm going to print these values. Let me run as, right click you have to do, run as Java application. I have already told you this thing. Then whenever you want to run your Java code, you have to use the you can say option run as Java application. Are you able to see it is printing the values S1 for S2? Yes or no? Yes. Yes. Okay, let me make a separator so that you can find it easily. Just between these two printings, I want everybody participation. Again, I'm saying that this is not a one-way communication. If you want to go with the one-way communication, you can see the YouTube video. There are so many good videos are there. Here, the purpose is that you have paid the money so that you can make a two-way communication, right? Any point of time in my session, I'm not teaching in the way that you have to wait till the last of the session to ask your question. Any point of time you are facing any problem, you are not getting anything, just interrupt me, Pradeep, please wait here. Just let me just make this thing clear.
then you have to proceed. Okay. So now it is fine. S1 roll number 7, Rabia, ABC, 8, Vivek and Yes. PQR. Is it okay? Yep. Yes. No doubt. Yes. Now I am going to show you one thing. Here, what happens that I told you about the properties, that properties, this is the name of the property. This is the, you can say, type of the property, and before that you write public. So I didn't tell you about the public, that I will tell you today. But basically what I've told you in the detail, that this is the name of the property, and before that you have to write the data type, means which type of value you want to store in the property. Is it okay? Yes. Yes. Now in my structure, I told you that student class or any class is just like a structure. It is like just like a blueprint, and any next person, any other person is going to use it. So that's why I've taken the example that this is student class. Let me again remove this thing. I will show you that you can call it, but the best way, the best practice is that you should not use the main function within the same class. I will give the funny example. Now think about that. We have created this class for other persons to use. Yes or no? You can take the example of Selenium. The person who has created the Selenium framework, he has created the Selenium framework for their own purpose or for the other person. Other person can use it and create their own framework. Yes or no? Yes. I can give the real example also. Now think about that. You have opened a restaurant. So you are going to eat. You have opened a restaurant so that you and your family is going to eat there. Or you have opened it so other persons come to that, so that it create a business. Yes or no? Yes. So same thing I can show you in the main class. This is the main class. It is something like a client, you can say, who is using the student class. Student class is created by somebody of you, and you have sell in the market. You have made it free available in the market, and other persons are using. It doesn't mean that you can use it. You want to use it? Just copy this code, and you can use in the same class. Means you are eating the food in your own restaurant. कोई रोक तो नहीं सकता? नहीं. So, but the best thing is that other persons should eat the food in your restaurant. So that is the case when other persons are using your function. Is it okay? Yes. Yes. So now I told you the purpose of student class is that actually you are trying to present a group in this real world. Now you can say my student class is a group where all the objects should have the property student roll number, student name, and the student school name. So we have designed this class to present a student group in this real world. Now tell me, in this group, every person can have their own school name. So this is created for a general, not for a particular school. This structure is created for a general student. Student can be from any school. Yes or no? Yes. Yes. Now tell me one thing. Yeah. Tell me, who is going to ask? Yeah, tell me. Okay. So now tell me one thing. I want to create this structure. I want to make changes in the structure. I want to modify my group structure of a student so that it can present only a particular school. So can anybody tell me what restriction should be here? School name should be fixed. Yes or no? Yes. Yes. So it means what happens? Value This should be structure, assigned. yes, this structure is saying we have a student roll number property. Everybody will Yes. have. Student name, everybody will have. Student school name, everybody will have. Now the concern is that student name will be same for everybody. It will be same for everybody. So here you can see in the main class when I created the first object S1 and created a second object S2. So for S1, it is a ABC. For second student, the name is PQR. So it is presenting a student, but from any school. Now how I can make it for a particular school? I will make a keyword here in the school name property only. static. Anybody know the meaning of static? किसी को पता है static की meaning? Constant. No. Trust me, 99% I got the wrong answer. Reason is that static doesn't actually. I get you that you are trying to relate with the particular English word. Static means that is not moving, right? So there are two things: static and dynamic. You are trying to relate with that. Yes or no? Yes. So here whenever somebody is going to ask you what do you mean by static, what is the meaning of keyword static in Java, simply use a single word, shared. What do you mean by it? Shared. And in the first session I have told you that whenever you are going to create the object, it assign the memory, and within the memory it actually stores the value. Yes or no? Yes. So if you have seen, let me open that paintbrush so that I can show you the proper thing. This is my paintbrush.
I assume that this is my memory. So in this memory, I'm trying to assume same thing. When I have run this line in the main class, what happens? It created the object in the memory. How? First of all, it allocate a object location, Yes. just like a square or oval. Yes or no? And within this object, it will create an object. So how, when it create the object, I told you what happens. Actually, at that runtime, it goes to the class and just check how many properties are there. So 3 properties are there. Yes. So for the time, don't consider static. In this case, when it will come to here, oh, we have 3 properties. It means every object should contain these 3 properties. So it will create the object. Within the object, it will create 3 memories. Means there is a memory for the object, this oval shape, and within this oval shape, it will internally create 3 memories for 3 purposes. For storing roll number. Yes or no? Pradeep, are you sharing any other screen? Yes, this is Sorry. Maybe. That's why you tell me right in writing. I have not shared this thing. Okay, you guys are telling me late. Okay, let me do one thing. Let me share the entire screen. Okay, let me. Now are you able to see my screen? Yeah. Yes. Okay, great. So let me repeat it again. Same thing happened. I told you whenever this line runs in the memory, what happens? It actually creates in the object in the memory. How? When it runs this line new student, it goes to the memory and create a location for the student one object. This is the oval one, oval shape. Okay. And within oval shape, it has to create 3 location for storing 3 values. Is it okay? The rectangle one. Is it okay? Yes. So within I'm trying to define it again. So it is just like a revision also for you, and it is related to the next topic also. So let me this one. This is the student roll number. This is the student name, and the last one is student school name. Is it School okay? name. Yes. So now same thing will happen. What happens when it happens? It is going to execute the next line. So same thing will happen. Yes or no? Yes. So it will again do the same thing. It will again create an object oval shape, and within this object shape, it is going to create. So now we have 3 objects in the memory. Yes or no? Yes. S1. And S1, yeah. So S1 is S1 working and now. So I told you last time also that here, right side part is called object, which is actually creating the object in the memory. You can't see it. You can't see. I am trying to show you with the help of paintbrush, but you are not able to see. You are only can refer that S1, S2. memory location with the help Reference of value. S1 and S2 that are called reference Reference variables. variable. Yes, you can simply say that this is S1, and you in your program, whenever you want to point the first location, first object, you will say S1, and whenever you want to do the second, you will say S2. True. Yes or no? Yes. Yes. So whenever you want to assign some value to the student roll number for the first object, you will say S1 dot student roll number. When you want to assign the value for roll number for the second object, you will say S2. S2 dot. So actually S1 and S2 reference variable are going to work on that. Okay. So now you will see when I run this thing, you will get the object. Now you'll see I'm going to make a change here. STATIC. Now anybody can tell me, is there any change will be in the output? You can guess. You can guess. I don't think so. You can guess. I don't think about that. Yeah, that if you will give the wrong answer, it will be something wrong. No. Yes. Yeah. Oh, so output will be the same. And now you'll see. Now you'll see. Are you able to see any difference in the output? If you can, anybody can see the difference? School name is same. Yes, the school name is same. So now just understand and trust me. I have taken around 1500 interviews in my life, and 99% I got this answer wrong. Okay, and this is always my second question from the Java, because I know that if people have really make some experiment and properly learn using the Java memory concept, when they learn the Java using memory concept, then they can tell me the right answer. When you are learning something, oh, static is something constant, something like, no. Actually, what happens that
Always in the starting of Java, something is going to be wrong, which is set in your mind, that is going to create a weak building for you. And here I will tell you what is the meaning of static. I told you what is the meaning of static. Shared. So now tell me, you can run the program with me and you will give me the right answer. I will not give you the answer, but I will tell you the concept. Static means shared. Now just try to run the program with me. Okay. When this object will be created, what will happen? I will tell you only thing. It will go to the student class. This time it will see how many properties are there. One is roll number, one is student name, third is student name, school name. But school name is static, means it is shared. So now in this case, how the memory will be work. Let me do Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. I will show you. In this case, whenever this line will run, your object, this line will run, Control will go to the student class. It will create the object memory like the oval. Yes, that is true. But within this object, when it will try to create the memory for individual property, it will create only for the non-shared property. Which are the non-shared property? Student roll number, student name. Okay, so now you will see within it, I am going to create only two locations, student roll number and student name. You will see, because it only find, oh, when I'm trying to create the object, I have to only choose the non-shared, because non-shared means that is related to the object, within the object. Yes or no? Yes. So it will create the memory within the object. Now, when it will go to the third property, oh, I have to create the memory for it, but it is shared. Means when it is shared, it means it is not related to a particular object. Shared means it is related to the class, which is shared among all the objects. Are you getting my point? Yes. So for this purpose, it will create the memory, but out within the memory, within the whole memory, but outside object memory. Getting my point? तो कहाँ बनाएगा? It will create the memory. Memory तो बनाएगा, but it will not create within the object. In the oval shape, it will not create. It will create outside the object. Outside. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes. Now you will see here. If I will try to see this code, now what happens? Again, the thing is that if I will write this line of code here, so it will again do the same thing. What it will do? It will create, first of all, create the object. This one. Yes or no? It will create the two memory locations within the object, just like this. Yes or no? Yes. Because object creation process is same. When it will come to the third property, oh, it is shared. Now it will check, because it is shared, maybe some object is already created in the memory, and at the time of that creation, shared memory is already created. Yes or no? So when it will check this thing, oh, this time I don't need to create a shared memory, because shared memory is already created before the my creation first object. So it will, what it will do for the shared property, it will point to the same one. Yes or no? I will show you, don't worry about that. So now you will see, when it will create the first object, S1 is going to point the first object. Yes or no? Yes. So you will see here, very interesting thing. S1 is going to point the whole object here for two properties, and for shared property, it is going to refer this one. Is it okay? Yes. Yes. So now same thing will happen when it will create the S2. S2, for the S2 object non-shared property, it will point to the this one, and for the shared one, it will point to the same one. Yes or no? Yes. Now you will give me the answer. Why it is giving the answer PQR PQR. Now try to run the code one by one. S1 roll number equal to 7. Where it is going to save the 7? In which location? S1. 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 Yes, very good. You are Student roll saying number. very good. Yes. So let me make it in the red color so that it will be a little bit interesting. Why it is not led by right. Let me this one. Now oh, it is giving 7. Okay, this one. So now I want to write student name S1 dot Rabia. Where Rabia is going to save? S1 student name. Okay, now tell me, if I'm saying that S1 dot school name, where it is going to save ABC? Outside of the. Very good. Yes. Because in S1 is also pointing to this one. So when you are trying to save some value for the S1, S1 is pointing to this location. Yes or no? Yes. Yes. Now when you are saying S1 dot student roll number, S2 dot roll number, where it is going to save? In the second. Because I told you everything happening with the help of reference. S2 is pointing there. Yes or no?
Yes. Now where Vivek is going to save? Student name. S2. Yes. Now very interesting thing. This time you are saying S2 dot student school name. PQR. PQR it is going to PQR. point. Actually this time it will whatever it will Over. do because it will share. Yes, clapping for you. Yes, You sir. have used the term. It will override. Overlap. You guys are awesome. This girl has given the very good answer. So it will override. Yes or no? Yes. So now you give me the answer. When S1 will try to read the values from the memory and S2 will try to read the memory, everything, roll number and student name, that will be unique because they are not shared. But the student name will be the, Shared one. Sure. so It will take answer from will be shared. PQR. So you are getting the right answer, yes or no? Yes. Yes. Now you can see here. Now tell me why we are not giving the answer ABC. We are getting the answer PQR because last updated value will be there. Yes or no? Yes. Now think about that. After line number 18, S1 decided, I will again change the student name. S1 is trying to change. So where it will, S1 is going to change? Let me make the make. Let's make automation easy. So the school name SLMA. So this instruction will executed after line number 18. So where it will impact the value? Where it will impact the value? In shared path only. Yes. So now anybody can tell me what will be the output if I will write this code? One will be changed. And the LMAE will be for both the one. Yes or no? Yes. Yes. Now I want to see your understanding. I'm removing this line. I am cutting this line of code, Control X and pasting this here. Now anybody can tell me the answer. Just think about, don't be hurry. Don't be hurry. It is your learning time. Now anybody can tell me what will be the output? ABC. PQR. 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 Both the answer PQR or one will be ABC and then PQR. You can Both see the will be code. PQR. Both will be PQR. 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 No. PQR. Answer is wrong. Now who can tell me the answer? Okay, the thing is that I got your point that this is shared one. But now the thing is that you have to Okay. understand when you are writing code to update value and when you are writing the code to read value. Now tell me, at this line of code, what was the value of school name? ABC. ABC. After ABC, before updating this value, S1 already read the value from the memory. So what was the value at that time of school name? ABC. BC. You got the confusion? Yes. 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 And I can give you the real example here. Let me take the very good example here. Now think about that. In this batch, when I come, you just think about that. You are sitting in a room. I just entered to your room and I come with you can say you have 10 people. Suppose take the example. I will come with 10 box of chocolates, 10 box of chocolate, and every box contains 10 chocolates. I have given every box to each person. Getting my point? I given each box to Ashwini, Sanan, Shreyas, Gulam, Payal, everybody I've given. Now the thing is that Payal really liked the chocolate. So Payal ate 2 chocolate from the box. Getting my point? When I will ask the question with, you can say, when I will ask the question with the Vivek, that Vivek, how many chocolates in the box? So Vivek will see his own box. Yes or no? Yes. So what will be the Vivek, how many chocolates in your box? Again, 8. No, in your box. You have 10. not ate the 2 chocolates. You have your own box. Payal has ate 2 chocolates from the box, from her own box. Yes or no? So for your, it will be unchanged. Yes or no? It's 8. No. In Payal box, it is a 8. But because you have your own box, in your box at the time of sharing, every box contains the 10 chocolates. So you have not ate your chocolate. So according to you, your should box be 8. contains, getting my point? Yes. And Payal it. Now the same thing. If now Vivek this time ate 3 chocolates. So when I will ask the question with the Payal, how many chocolates in the box? So Payal will 8. give the answer 8. Because this time every box is given to everybody. It means everybody has its own memory. Yes or no? And you are making changes in your own memory. Yes or no? Yes. Now, second scenario, I will come to your room, I will come to your class with single box, and I will just keep that single box among you and will say, this is shared. Now, this time again, Payal ate 2 chocolates. Now I will ask the question with Vivek. Vivek, how many chocolates in the box?
So this time Vivek will give the answer 8. Reason is that because it is shared. So when Vivek will check, it will check the shared box. Yes or no? Yes. So Vivek will give the answer. How many chocolates are there? 8. Eight. Yes or no? Yes. So now think about that. When Vivek, you can say just check and it found 8 chocolate because it was the shared box. Now I will ask the question. Now I will ask the question with Payal. How many chocolates are there? 8. 8. 8. Now the thing, Payal already given me the answer that the chocolates are 8. Now this time Shreyas, after reading the value, when Payal checked the value from the box, it was 8. After that, Shreyas picked 2 more chocolates from there. So for Shreyas, how many chocolates are there? 6. Yes, 6, because whenever the person is checking the box, that you will find the final value. Yes or no? That is taken by anybody. Are you getting Yes. my point? Yes. Yes. So same thing happened here. You will see here first person updated the value ABC. Then first person read the value. Yes or no? Then you are writing. After that your statement is running to update the value. Yes or no? Yes. So it also matters that when you are writing the value and when you are reading the value. यहाँ पे देखो हम value को क्या कर रहे हैं? Read कर रहे हैं. अगर मैंने इस value को, if I read this value after both the statement execution, then it will see the final impact. Yes or no? Yeah. Yes. Now you got the answer. Why it is giving the, you can say this time it is giving the answer PQR, because when S1 is trying to fetch the value and S2 is trying to fetch value, before that PQR is updated. But if you will try to read the value, something like that, just see. Now you can see one interesting thing, you have to give the answer. I am writing this code Control X here, and I am just writing this code Control X. This is from here, and I'm putting this code. Just see carefully, then give me the answer. I'm writing this code. Now anybody can tell me the answer of school name. What will be ABC the... both. Yes, both. Yeah. it means Yes. now you guys got the concept that it really matters when the person is updating the value and when the person is reading the value. So here you can see S2 has already read the value, then updated. Yes or no? Yes. So at the time of reading the value was ABC, then the S2 updated. So now the after line number 29, the final value with the S2 is PQR, but the printed value will be ABC because you have read the value before it. Yes. Yes. Anybody have any doubt? No. For shared also we need to give object name like S1, S2. Yes, that I'm coming. This is clear. Okay. Yeah. Okay. Now you will see whenever. सर जस्ट अ मिनट सर, ये जो अभी आपने बताया ना, ये PQR वाला थोड़ा हाँ जी आपने PQR बोला कि ये प्रिंट हुआ है नेम ABC, राइट? इसके लिए यहाँ पे ये प्रिंट हुआ, बट सर फिर इसको कब रीड करता है? ये जो आपने सेकंड जैसे वैल्यू अपडेट कर दिया ABC, read means whenever you are printing the value, it means you are reading, right? So whenever you are writing the statement for printing, then you are reading. Are you getting my point? अगर आपने कोड आपने, अच्छा आपको कैसे पता है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. नहीं, मेरा मतलब ये है आप बोल रहे हैं कि SOKLN में ABC है, इसके लिए उसने ABC प्रिंट किया, बट इसके बाद आपने उसका वैल्यू चेंज कर दिया यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में. राइट. तो ये मतलब अभी जो आपने इसके साथ ही कोड रन किया है ना, तो ये वैल्यू अपडेट क्यों नहीं हुआ है? नहीं, ये वैल्यू अपडेट हुई है, लेकिन मैं आपको कैसे दिखाऊं कि ये वैल्यू अपडेट इसके बाद जब लाइन ऑफ कोड चलाओगे, व्हेन यू विल राइट एनी लाइन ऑफ कोड टू गेट द वैल्यू, देन यू विल गेट द आंसर. अगर मैं इस कोड को दोबारा चला दूं इसके बाद भी, गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, तब तो PQR आ जाएगा. हाँ, तो आप समझे नहीं, ये कोड होता है whenever you are writing this code S1 डॉट केवल इतना लिखते हो, इसका मतलब you are reading the value. Are you getting my point? You are saying S2 dot school name means you are reading the value from the memory. जब आप लिखते हो S2 dot school name equal to, then you are assigning the value. तो यहाँ पे आपने देखो वैल्यू को क्या किया? रीड किया. Yes or no? Yes. So then it this line of point at line number 27 it will give the answer ABC, क्योंकि ABC था. Yes or no? ठीक है. Then at line number 20 दोबारा प्रिंट कर रहे हैं आप. अगर मैं अच्छा, मैंने आपको देखो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया. क्या आप यहाँ समझो, पायल ने यहाँ पे 2 चॉकलेट ले ली, तो इस समय जब पायल यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगी शेयर्ड बॉक्स की, तो क्या मिलेगी? 8. अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसी वैल्यू में से मैंने 2 चॉकलेट और निकाली. जस्ट थिंक अबाउट दैट, दिस इज डूइंग टू रिमूव 2 चॉकलेट. अब वैल्यू इसकी 6 हो गई है, लेकिन इसके बाद कोई जाके चेक करेगा तभी तो 6 दिखेगा.
बॉक्स में 6 है, लेकिन मैं किसी से बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा किसी से, गुलाम से, विवेक से, कि जाओ गो एंड चेक द बॉक्स। अगर कोई बॉक्स चेक नहीं करेगा तो सबके दिमाग में तो अभी वैल्यू क्या पड़ी है, 8। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे Yes. मैंने क्या किया, S2 की हेल्प से वैल्यू को क्या किया, रीड किया। नाउ यू विल सी, सो इट इज समथिंग लाइक दैट बिफोर अपडेटिंग द वैल्यू एंड आफ्टर अपडेटिंग द वैल्यू। तो देखो आंसर क्या आएगा, यू विल सी द वैल्यू। नाउ यू आर गेटिंग द आंसर, जस्ट सी ABC एंड PQ। तो इसका मतलब देखो मैंने क्या बोला है, यू कांट सी बिकॉज दिस लाइन इज मेकिंग सम चेंजेस इन द मेमोरी। ये मेमोरी में चेंज कर रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, जब तक उसको प्रिंट नहीं करूंगा दिखा पाऊंगा। So this line is doing the printing for you, yes or no? ठीक है, तो ये लाइन आपको ऐसे कर सकते हो, दिस लाइन इज एक्चुअली असाइनिंग सम वैल्यू, उसमें कुछ चेंज करिए। आप इसमें लिखोगे दिस इक्वल, अगर आपने केवल इतना लिखा, सो इट इज यू आर रीडिंग द वैल्यू। व्हेन यू आर राइटिंग इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, इट मींस यू आर assigning the value. Getting my point? Yes or no? Yes, sir. Yes, I got it. Thank you. Okay, great. So if anybody have any doubt, don't think about that, what other will think. If you have a doubt, you can ask me anytime. So let me write Control X. Now I'm going to write again. So here you will see, this time you got the answer. It is static. Now somebody asked me one thing. I have already, that was my next topic to tell you, that you will see when I have used the static keyword in my this property in my code, I'm not able to see any error, but I am able to see a alert. Are you able to see this, the yellow one? ये orange color का दिख रहा है आपको? Yes, Yes. yes. Now you will see, I will tell you two things comes into the coding, not in the coding, in the real world also. One is called error and one is called alert. किसी को पता है what is the difference between the alert and error? Alert में with alert we can execute the code, but error आता है तो fail होता है, kind of Clapping. hard stop. Clapping for you, excellent. It is something like that, you can think about it, something like that. Something like that you can say, when you go to a particular road and sometime you have seen what happens that they give you an alert box that road is under progress. They just make a board there, but they don't give or put any hurdle there. So you can see the alert and then go, then proceed to the same road. Yes or no? On your own risk. This is called alert. So she had said the right thing. Alert means somebody has intimated you, but you are allowed to do the things on your own risk. Getting my point? Yes. तो अलर्ट का मतलब क्या होता है? अलर्ट का मतलब ये होता है, किसी ने मुझसे क्या बोला, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, आई कैन गिव द एग्जांपल। अलर्ट मतलब हमारे पापा हमेशा हमें क्या देते हैं, हमें अलर्ट देते हैं। क्यों? वो बोलते हैं बेटा पढ़ाई कर लो, फेल हो जाओगे। ठीक है, दे आर गिविंग द अलर्ट, लेकिन हम क्या करते हैं, अलर्ट हमको रोक तो पाते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते और फेल हो जाते हैं। अगर हम उस अलर्ट को मान ले तो पास भी हो जाएंगे। सो दिस इज समथिंग लाइक अलर्ट। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात, टेक द एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, where what do you mean by error? Error means she said the right thing. Error means I will give you the message also, but I will not allow to proceed you. मैं आपको proceed ही नहीं करने दूंगा। Yes or no? Yes. Very funny example in the movies. कोई लड़की बोलती है I'm going to make a love marriage, पापा उसको रूम में बंद कर देते हैं। ठीक है, मैसेज तो मिल गया, अब तो निकल ही नहीं सकती। Yes or no? कि पापा बोलते हैं ये बोर्ड लगा है और दरवाजा खोल के चले जाना। Yes or no? Yes. So alert is something like that, you can proceed, but error is something like that, nobody is going to allow to proceed. So here you are not getting the error, you are not getting the error, you are going the alert. Getting my point? Iska matlab you can do it, but it is not the proper way to do it. Getting my point? You can do it, but it is not the proper way to do it. Getting my point? अब ऐसा क्यों बोल रहा है? I will tell you. I have told you, what do you mean by static? Static means shared. And once something is shared, shared means sharing among all the objects. Yes or no? Shared means among all the objects. Yes or no? Say yes or no? Yes. Yes. And what is, when you are saying something is shared, it means it is not related to a particular object. It is related to the class, whole structure. Yes or no? अगर कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं करती है, वो सबके लिए कॉमन है, तो सबका कॉमन ही ग्रुप तो क्या कहलाता है? क्लास। यस और नो? Yes. So that's why it is saying you that if you want to access this property, if you want to access any shared property, I will advise you, don't take the help of any object. You can access directly with the help of class name. ये देखो, वो बोलेगा कि अगर आप देखो, alert is gone. Yes or no? Alert is gone. Yes, And you will yes. say there will no change in the output. Output में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया। अच्छा, सिंपल सी बात ये है, मैंने बोला ना कि व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्ड? अगर कोई चीज शेयर्ड है तो उसको शेयर्ड तरीके से प्रेजेंट करो। यस और नो? अगर कोई S1 ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं रीड करूंगा
if I will try to read from the S1 object, I will try to read S2 S3 किसी से भी करूं, है तो वो shared location पे, yes or no? तो हमको उससे किससे एक्सेस करना चाहिए? We should directly access with the name of class, and this is the best way. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे काम नहीं करेगा, लेकिन this is the best way. Now you can see error. Now you can see the alert. मैंने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे भी देखो कोड सेम चल रहा है. But what is the error message? Anybody can read the error message for me? हाँ जी. The static field, the static field student dot student school name should be accessed in a static way. अब वो देखो वो सब चीज, वो कह रहा है जो स्टैटिक फील्ड है उसको स्टैटिक तरीके से एक्सेस करो, है ना. आप कर सकते हो S1 S2 से, लेकिन उसको बोला कि अगर तरीका वो देखो, इट इज समथिंग लाइक दैट. अगर हम मुझे इफ यू वांट टू टेक द फूड, हम किससे खा सकते हैं? वी कैन जस्ट ईट द फूड विद द हेल्प ऑफ स्पून. स्पून से भी खा सकते हैं. एंड यू नो दैट स्पून से भी बड़ी एक चीज होती है दैट इज यूज्ड टू कुक द फूड. होती है स्पून की तरह बड़ी, क्या बोलते हैं? आई डोंट नो. Spatula. हाँ जी. So but now tell me, we can eat the food with that one also. We can eat the food with the help of spoon also. आप खाते वक्त किसी को क्या बोलोगे कि यार खाना है तो उससे खा लो ना स्पून से? Yes or no? Yes. हाँ तो मैं उससे भी लूंगा. So same thing here. This is called alert. वो कह रहा है प्लीज आपको जब शेयर्ड चीज यूज करनी है, so always try to access the shared things, not only the property. Every shared thing should be accessed with the name of class. आप देखो जब भी मैं क्लास का नाम लिखूंगा, every shared thing will be accessed. डॉट करूंगा, जो शेयर्ड नहीं होगी वो एक्सेस नहीं होगी. Are you able to see student school name only? You are able to see the Yes. roll number? No. No. है ना. So it is the best way. आपको फिर से बोल रहा हूँ, alert means you are allowed to do it, but this is not the proper way. Getting my point? ठीक है. Yes. चलो देखो, तो यहाँ पे भी कर रहा है, लेकिन मुझे करना ऐसा चाहिए कि I should use the, तो क्योंकि ये हमारी it is the shared point. Now you got the point? Yes. Who asked this question? किसने पूछा था ये? हाँ सर, उसने पूछा था. Great. And now you can see I have assigned the value with the help of student. जब मैं रीड कर रहा हूँ तब भी S1 का यूज कर रहा हूँ, तो देखो सेम दे रहा है ना. तो जहां पे भी whenever you are assigning some value, when you are reading some value, every time you should use the name of the class. It is the good approach. नहीं करोगे तब भी काम चलेगा. And what is the error? Error क्या होती है मैं बताऊं. I am just removing semicolon. क्या आ गई? Error. अब ये बोला इट इज एरर, आपको ये बढ़ने ही नहीं देगा. इफ यू ट्राई टू रन, देखो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखो क्या बोल रहा है. कंपाइलेशन एरर. आर यू एबल टू सी द कंसोल? अनरिजॉल्व्ड. अनरिजॉल्व्ड. आर यू एबल टू सी दिस? Yes. Yes. तो इसका मतलब क्या है? एरर वो होती है जो आपको प्रोसीड करने दो. व्हाटएवर आंसर द गर्ल हैज गिवन, दैट इज वेरी वेरी गुड. क्या कि अलर्ट होता है, you are allowed to proceed, but it is somebody is trying to intimate something, so try to work on that. ठीक है. और alert मतलब क्या है, मैं आपको बढ़ने ही नहीं दूंगा. Getting my point? ये clear हो गया? Yes. So now you have seen that we have achieved a structure. In which structure? Now I have created this. सर राबिया यार, सर एक डाउट है. सर जैसे अभी आपने बताया कि जो स्टैटिक होता है उसको हम इंस्टेड ऑब्जेक्ट की जगह क्लास नेम से भी मतलब स्टूडेंट डॉट उस ऑब्जेक्ट को सॉरी उस वेरिएबल हाँ एक्सेस कर सकते हैं. पर सर अगर मतलब सिर्फ सिंटेक्स में अगर नहीं लिखते हैं, मतलब इंस्टेड क्लास नेम, अगर हम वो स्टैटिक वेरिएबल जो हमने यूज किया है उसको जैसे पहले आपने किया था S1 से करेंगे, तो क्या ये गलत मतलब गलत सिंटेक्स कहलाएगा? नहीं, सिंटेक्स गलत नहीं. मैंने बोला सिंटेक्स मतलब गलत होता है कि जहां पे आपको सिंटेक्स जब गलत करोगे तो एरर देगा. ऑलवेज सिंटेक्स एरर इज ए कंपाइलेशन एरर. तो मतलब कॉलिंग बाय क्लास नेम, मतलब एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट बाय क्लास नेम, अगर वो स्टैटिक है इज द राइट प्रैक्टिस. बट अगर उससे भी कर लिया जिसको स्टैटिक बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं. आप देखो ना, मैंने आपके सामने, अगर मैं यहाँ पे देखो किसी भी एक जगह पे यहाँ पे S1 लिख दूं तो आउटपुट में कोई चेंज आया? आप मुझे बताओ. ये देखो नहीं. S1 के थ्रू भी आप उसी जगह पे जा रहे हो, सेम शेयर लोकेशन पे, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम आप सेम लोकेशन पे जा रहे हो. यस और नो? यस सर. तो केवल यूज करने का तरीका बदल गया है ना. जो मैंने आई हैव गिवन द बेस्ट एग्जांपल. खाना आप यू कैन टेक द फूड विद द हेल्प ऑफ स्पून आल्सो, और उससे भी खाते वक्त क्या होगा, जो खा रहा है जब उसको परेशानी नहीं है तो क्या करे, लेकिन हर आदमी एडवाइस तो क्या देगा, whenever you go to the you can say proper lunch for anybody's house, he will give you the spoon. कोई आपको वो नहीं देगा बड़ा वाला, है ना. Are you getting my point? That big spoon, something like that. Serving, कोई आपको serving spoon तो नहीं देगा? Yes. है ना? So always serving spoon is only for the serving purpose. ठीक है? चलिए, let me come back to here.
So now this thing is now this structure is saying that I have created a structure where school name is, you can say, shared. So school name shared करने के बाद, but there is a problem. What is the problem? Tell me. This school name is changed by any student. हम school names को किसी भी इस structure में एक drawback है कि हमने shared. We have made it shared. चलो हमारी requirement थी. But now the thing is that any object can change the value of a school name. Yes or no? Yes. Yes. अब आप मुझे बताओ, in the real world क्या ऐसा होता है कि आपने स्कूल में एडमिशन लिया and Sukesh has just entered in the school and Sukesh ने बोला I don't like the PQR school. अरे यार ये मेरे स्टैंडर्ड का, उसने बोला मैं ऐसे रखूंगा Sukesh Public School. So Sukesh is giving the name. Now after some time Vivek, Rabia come to school. Rabia ने बोला मैं तो उसका नाम रखूंगी Rabia Public School. So actually you have made it shared. So it is a problem in this case because every student can change the value. Yes or no? Yes. Yes. तो चलो एक तो हमने अचीव कर लिया कि जो नाम रहेगा वो सबके लिए कॉमन रहेगा लास्ट में, राइट? जो भी इट इज, इफ द नेम इज चेंज बाय राबिया एनीथिंग, at last the name of the school will be similar for everybody, but anybody can change at any point of time. Yes or no? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई. तो इसको करने के लिए Java have given you another keyword in the your syntax. Public, after public and before static use a keyword final. Final. Final मतलब क्या हो गया? अब आपको मैं बताता हूँ क्या होता है. If you will go to the particular this syntax, when it will create a memory for the shared one, at the same time it will see, जब ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा ये देखेगा अरे this property is shared as well as is final. Final means logged. Final means Value will be logged. yes. स्टैटिक का मतलब होता है शेयर. आपको कभी भी मैं नहीं बताऊंगा कि दो चीजों को मिक्स मत करो. कब मिक्स करो? उनकी इंडिविजुअल मीनिंग को लो एंड देन ट्राई टू क्रिएट योर डेफिनेशन. स्टैटिक मींस शेयर्ड, राइट? दैट इज अनदर थिंग एंड फाइनल इज लॉग्ड. यस और नो? व्हेन आई एम सेइंग दैट it is static and final both, it means it is shared and locked. Yes or no? ये shared भी है और locked भी है. Yes or no? Yes. Yes. Now can anybody give me the answer when I have used the keyword final? यहाँ पे एक error देने में लगा. Anybody can read the error for me? कोई मेरे लिए error पढ़ेगा? The blank final fields student sub school name may not have been initialized. अब मैं बताता हूँ क्या कह रहा है. Now again think about that. यहाँ पे इसने आपको error इसलिए दे रहा है, अगर मैं अपने कोड को चलाऊं तो थोड़ी देर के लिए मानते हैं it is not giving error, it is not giving any type of error. तो कोड कैसे चलाते हैं? This line of code will run, yes or no? एक एक करके चलेगा. So it will do, let me control that here. Control that. Here you will see just what it will do. It will create an object in the memory. Same thing. Yes or no? ऐसे बनाएगा. Two properties are non-static. Non-static means not shared. Created the memory within the object. Is it okay? Now it created this memory outside the object, which is shared. Is it okay? Yes. And it is final. So when you will make it final, it means at the time of creation, it will lock it. ये इसको क्या कर देगा? Lock कर देगा. मतलब मेमोरी में जगह तो बनाई लेकिन उसपे क्या लगा दिया? ताला. Yes or no? Yes. अब मुझे आप ये बताओ. Now that's why I'm saying that just assume that this error is not giving any compilation error. कोई compilation error नहीं दे रहा. अगर मान लो तो ये कोड कुछ क्या ऐसे चलना चाहिए. Then it will give S1 and S1 will assign to this object and common property this one. Yes or no? अब मुझे आप बताओ when the control will go to the next line, आप roll number, you can change the value of roll number and student name, but can you change the value of student school name? No. No. क्योंकि एक बार आपने अपना स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया, आफ्टर दैट इट विल नॉट कम बैक टू द प्रीवियस वन. और जब कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आता है तो उसने जितना भी यहाँ पे काम किया है उसको फाइनल कर देगा. इट मेक इट फाइनल मतलब दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड. तो आप ऐसी मेमोरी का क्या करोगे जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा और ताला लगा दिया? यस और नो? आपके घर में इन योर हाउस, आई हैव गिवन इन योर बंगलो, आई हैव गिवन अ एक्स्ट्रा रूम. मैंने आपको एक एक्स्ट्रा रूम दे दिया, बट आई हैव पुट ए लॉक ऑन इट. मैंने बोला इस पे ताला लगा दिया. क्या उसके लिए कोई यूजफुल है आपके लिए? इज इट यूजफुल फॉर यू? No. No. तो आपको एक काम तो आप कर सकते हैं, तब भी यूजफुल करते. कैसे? आप कहते हैं कि अगर आप ताला लगाना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू मेक इट लॉक, तो मेरे घर में आपने दे रखा है, मुझे एक काम करते हैं, कम से कम अपना कचड़ा ही भर देते हैं उसमें. यस और नो? जस्ट लाइक ए स्टोर रूम. यस और नो? अरे कुछ तो काम आता, कम से कम खाली रूम मेरे घर में रख के मैं क्या करूंगा? यस और नो? Yes.
तो यहाँ पे whatever you are trying to say, Java is trying to say you are trying a memory which is shared. That is okay, but it is final means you are locking it. So you can do one thing before locking. Can you assign some value? तो मैंने बोला लो assign कर दो, तो देखो error चली जाएगी. Error is gone, yes or no? Yes. अब इसका क्या impact पड़ा देखो. Now again try to run the code. When the code will run, it will go to the memory. Let me control Z. फिर से recap करते हैं. क्या करेगा? It will create the object in the memory student roll number. ये करेगा and what it will do, जब ये इसकी मेमोरी बनाएगा same time of memory it will store the value, क्योंकि मेमोरी उसी समय वैल्यू भी दी गई है. Yes or no? So at the time of allocating the spaces, it will store the value. Yes or no? Yes. Yes. Now it is store the value. It will come to this line. जब ये वापस ये काम खत्म करके यहाँ पे आएगा, उसके बाद जो जो पीछे चीजें हो चुकी हैं वो फाइनल करता है. फाइनल का मतलब it means it will make a final decision on that. तो डिसीजन क्या था कि जब पहला ऑब्जेक्ट सारा बन जाएगा तो इस मेमोरी को क्या रखना है? लॉक्ड. यस और नो? Yes. अब आप मुझे बताओ, ये मेमोरी लॉक तो है लेकिन एक फायदा है, इसमें एक वैल्यू पड़ी है PQR. यस और नो? अब देखो उसका फायदा क्या है. बिकॉज यू हैव मेड इट द फाइनल एंड शेयर्ड, इसमें एक वैल्यू पड़ी दैट इज PQR, बट नाउ इन द कोड नोबडी कैन चेंज इट. यस और नो? यस. अब कोड में चाहे S1 ट्राई करे S2, जब ये लॉक हो चुकी है कोई चेंज कर पाएगा? नहीं. तो ये लाइन ऑफ कोड तो वो कभी लिख ही नहीं सकता. यस और नो? Yes. तो देखना कौन सा लाइन नहीं लिख पा रहा है. Assigning the value, but reading the value he can write. Yes or no? हाँ, वैल्यू स्टोर हो इसलिए रीड कर सकते हैं. रीड तो कर सकता है. यू कैन सी जहां जहां मैंने रीड करने का कोड लिखा है student dot school name I am able to do, but जहां पे equal to something assigning I can't do. Yes or no? तो You मतलब can see फाइनल that. स्टैटिक हुआ तो वो वी कैन ओनली रीड ओनली, राइट? देखो इसको कहते हैं लर्निंग. यू हैव गिवन मी द क्वेश्चन आंसर. इंटरव्यू में कभी कभी आप पूछेगा व्हाट इज रीड ओनली कांस्टेंट, तो ये रीड ओनली कांस्टेंट नहीं हो गया. चाहे आप रीड ओनली बोल दो या कांस्टेंट. रीड ओनली मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जिसको कोई रीड कर पाएगा केवल, तो वो भी कभी चेंज नहीं होगी. यस और नो? Yes. And what do you mean by constant? A value that nobody can change it. So in interview they can ask you something like that. Can you tell me how you can make a read only or constant? Simply tell them using final keyword. Getting my point? Yeah. Right. Clear हो गया? Yes. Yes, Okay. sir. Now you can see that's why in my class wherever I will try to write a code to assign something. देखो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ. I'm writing this code. What error you are getting? Anybody can read the error for me? The final field student school name cannot be assigned. क्यों दे रहा है? क्योंकि ये फाइनल है ना. अगर मैं यहाँ से फाइनल हटा देता तो देखो ये प्रॉब्लम ही चली जाती. यू विल सी चली गई मेन से कोड एरर. ये देखो Yeah. आ रही है एरर. No. So because the thing is that you have made it shared, but anybody can change the value. तो फाइनल का फायदा है nobody can. Now tell me, now you can say this is a blueprint for a particular school PQR. अब ये स्कूल का स्ट्रक्चर किसको प्रेजेंट कर रहा है? केवल PQR, क्योंकि इसमें जो भी स्टूडेंट आएंगे बाय डिफॉल्ट उनका स्कूल नेम तो PQR ही होगा. तो क्या ये किसी और स्कूल के लिए एप्लीकेबल हुआ? नहीं. No. नहीं. So in this way you have designed a blueprint. मैंने बताया था blueprint. आपने एक ऐसी मिसाइल बना दी जिसके अंदर केवल क्या होगा? You are going to use a, you can say chemical thing. आपने बोल दिया केमिकल ही यूज होगा. Now you are not going to use any type of other type of RDX. तो कोई और तरह का यूज ही नहीं कर सकते. Same thing here. I have make a restriction that my school name is PQR. तो आप समझ गए ना स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? Yes. So in this way, Yes. or interview में this is very very hot question. They can ask you what they can ask you. What do you mean by static? And trust me, whenever you are going to face the interview in the Oracle, आप कभी भी अगर उसमें लंबी चौड़ी कहानियां बोलोगे, he will understand you are trying to play with the concept. आप उसे सबसे पहले तो वो बताओ, बोलते ना one word description, one liner description, that is always best. वो पूछेगा static क्या होता है? एक वर्ड बोलना shared. Trust me, if he is a technical guy, he will understand. When he will say, what do you mean by final? Just say locked. अब वो अगर पूछता है, no, try to explain me. Then you explain it means, sir, shared means the memory is shared. So every object can access it. And final means everybody can access it. Nobody are allowed to make the changes. Getting my point? Yes. चलिए, तो हमने we have learned this thing and it is known as, you can say, static. तो यहाँ पे we have learned this thing. After this I will try to give you some particular
you can say terms which is used here. जब भी आप किसी के आगे स्टैटिक लगाते हो, I'm not talking about the final. अगर आपने फाइनल नहीं, केवल स्टैटिक कीवर्ड लगाया अपनी प्रॉपर्टी के साथ, then this property is known as class property. इसको क्या बोलते हैं? Class property. And when you are using any property without any static, तो इसको बोलते हैं object property. Getting my point? और आपको समझ में आ रहा होगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि that is related to the object. Yeah. And object property is also known as instance property. Instance मतलब actually object is known with another name that is called instance. Instant. आप इंस्टेंस बताओ, आप ऐसे बोलते हो ना, आप अगर इफ यू हैव रियली टॉक्ड अबाउट योर लाइफ समटाइम, लाइक आप बोलते हो अच्छा आप इस बात के बारे में बात कर, कैन यू गिव मी रियल इंस्टेंस? कोई एक वाक्य बता सकते हो? यस और नो? तो इंस्टेंस मींस क्या होता है? अ रियल थिंग. सो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस. मींस क्लास इज अ स्ट्रक्चर, इंस्टेंस मींस अ रियल ऑब्जेक्ट. सो यू इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट समटाइम द पीपल यूज द टर्म इंस्टेंस. तो आपको क्या बोलोगे इससे? इंस्टेंस प्रॉपर्टी. इज इट ओके? Yes. So this is called, without static it is known as instance property, and with the static keyword it is known as class property. And when you have used the final keyword, then it is called class constant. Yes or no? Yes. It is class तो function. ऐसे ही आपको करेगा, बार बार पूछेगा. And trust me, ये this is the base of the any Java coding. अगर आपको आ गई, trust me, you are going to write a very good code. Now there is no challenge in the market that people are not able to write any code in Selenium. They are able to write. Now only the competition is that they are going to write a efficient code. सही कह रहा हूँ? सब लोग 2 नंबर का प्रोग्राम बना लेंगे. कौन कम मेमोरी और कम वेरिएबल से बना ले? This is the competition. Yes or no? Somebody has written a program, static property को S1 से access किया. He will also just completed the program. Somebody access the property with the class name. He has also just completed the program. लेकिन selection उसका होगा जिसने क्या किया? Class name से. Because he has utilized the proper concept. Getting my point? Okay. Now the third thing we will learn, whenever this type of property is defined within any function, then this is known as local variable. So I have not completed the function part. So I will come to that part when I will complete the function. Is it okay? ये क्लियर हो गया? व्हाट इज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज क्लास प्रॉपर्टी? Yes. चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. नाउ द थिंग इज दैट आई हैव डिजाइन दिस क्लास एंड दिस इज द मेन क्लास. ये क्या है? एक मेन क्लास है. यस और नो? Yes. अ मेन क्लास के अंदर आई एम ट्राइंग टू क्रिएट द स्ट्रक्चर. यस और नो? Yes. तो आई विल डू वन थिंग. एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट मी रिमूव द कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट. ये सब कॉम्प्लेक्सिटी हटा देते हैं. केवल आपको जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, फॉर दैट पर्पज आई नीड ओनली वन ऑब्जेक्ट एंड दिस वन. ठीक है, यहाँ पे लेट मी राइट S1 ही लिख देते हैं सो दैट आई कैन शो यू. आई हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट एंड द रेफरेंस इज S1. सो लेट मी मेक इट फाइनल भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए. नाउ यू सी हियर, आर यू एबल टू सी एनी एरर in line number this one? No? No. Okay, so here the thing is that you will see. Now first of all focus. The class which is used is in another package, horror package. The student class is in a horror package. Yes or no? Yes. Yes. And the class which is using the structure of a student, that is another package, main class. Yes or no? Yes or no? Yes. So you are able to see what happens. You are able to see this thing before the data type, which is called public. This is known as access specifier. इसको क्या बोलते हैं? Access specifier. मतलब किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि आपने उसका क्या दिया है? स्कोप. Access specifier actually give you the scope of using this property. You have given this public. आपने public दिया है? Now we'll see you. हम एक क्लास और बनाते हैं. I'm going to create a class here. एक क्लास में बनाता हूँ student class, where the student class access, same class I'm creating SHREY. Says this is your spelling? This one? Yes. Yes. Okay. Now you can take the example that student is one class and Shreyas is one user. So Shreyas is available on the same. Yes or no? Now you can say, I will take the example of another person. Let me remove main class, and some other person I can take the example of Vivek. Vivek also want to use the structure of, you can say, structure of student class. Structure is student. But yeah, but he is available in the another package. Shreyas वहीं पे है जहाँ पे student class है. Vivek वहाँ पे उसके दूसरे पैकेज में जहाँ पे student class नहीं है. Is it okay? Yes. Now you will see 3 scenario are possible. 3 scenario हैं क्या ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के. Object, let me first of all copy this code. Just see here.
First of all, object is created within the same class. Yes or no? Okay. Yes. Object is created in the another class, but the class is available in the same package where student exists. Yes or no? Yes. Yes. And third is object is created in the another class which is actually available in the another package. Yes or no? Yes. Are you able to see any error? No. No. Now I'm going to make a change. I'm going to make a change in the structure. Instead of public, I'm going to make the access specifier as a private. Private I'm trying to make. केवल student roll number में. In the student roll number, for the student roll number, I make the access specifier private. आप मुझे बताओ, are you getting error at the same code, same class? No. Are you getting any error on line number 16? No. No. Are you getting error in stress? Yes. Yes. So what is the error? The field student name is roll number is not visible. Visible. The field student roll number is visible. Now what happens whenever you give the access specifier this private? Int means this property can access within the same class only. Whenever you create the object, this property can be accessed in the same class only. You cannot access this property outside this class. Getting my point? Yeah. आपने अगर किसी प्रॉपर्टी को प्राइवेट बना दिया है तो जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सेम क्लास में ऑब्जेक्ट बनाने पे तो एक्सेस हो जाएगी, लेकिन दूसरी क्लास में उसका एक्सेस नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes. चलिए Yes. अब एक काम करते हैं लेट मी मेक इट, हम इसको रिमूव करते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं. नाउ यू कैन टेल मी वेयर यू आर गेटिंग द एरर एंड वेयर यू आर नॉट गेटिंग. कंट्रोल एस. इन द सेम क्लास एरर ऑन दिस लाइन. No. No. In the Shreyas class, you are getting error on this line. No. No. In the Vivek class, you are getting the error. Yes. Yes. इसको बोलते हैं whenever you are not defining any access specifier. जब कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, then it is known as default. क्या बोलते हैं इसको? Default. Default. Now the question is that what do you mean by default? Default means if any property in any structure is defined as default, it can be accessed in the same class and it can be accessed in the another class with the condition that another Same class package. should be in the same package. Getting my point? Yes. So it means private is something within the class, default is within the class in the plus another class with the condition same Same package, package. and the broader one is public. Public means everywhere. संस्कृत में बोलते हैं अत्र तत्र एंड सर्वत्र, मतलब यहाँ वहां और सब सब जगह. तो पब्लिक का मतलब दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना? कहीं पे भी यूज करो, सेम क्लास अनदर क्लास इन द सेम पैकेट, डजंट मैटर. यस और नो? सो एनीबडी कैन आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट, डिफॉल्ट एंड पब्लिक. प्राइवेट मींस ओनली विद इन द सेम Class. क्लास. डिफॉल्ट मींस सेम क्लास प्लस अनदर क्लास बट Same. सेम पैकेज. क्लास दूसरी क्लास किसमें होनी चाहिए? सेम पैकेज. And the third one is public. Public means everywhere. कोई restriction ही नहीं है. Getting my point? Yes. और एक आपका बचता है that I'm not going to tell you today because that is totally depend on a topic that is called inheritance. उसको बोलते हैं protected. अगर किसी ने जावा पढ़ी हो, they know that there is a access is specifier that is known as protected. तो protected का तभी समझ पाओगे when we will cover the topic inheritance. तो इसमें किसी को कोई डाउट है? No. ठीक है. सो नाउ इट अगेन द थिंग इज दैट मे बी समबडी हैव अ कंफ्यूजन कि कोई ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी आपको एक जैसे रखनी है. फ्यू प्रॉपर्टी कैन बी प्राइवेट, फ्यू प्रॉपर्टी कैन बी पब्लिक एंड फ्यू प्रॉपर्टी कैन बी डिफॉल्ट. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. क्योंकि ये भी आपके रियल वर्ड से बनी है. इन रियल वर्ड आल्सो थिंक अबाउट दैट. आपका जो बंगलो होता है, इन द बंगलो जस्ट थिंक अबाउट दैट. यू हैव अ बंगलो. आई कैन टेक माय ओन एग्जांपल. आई हैव अ बंगलो. आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स हियर, है ना? एंड माय फैमिली, माय होल फैमिली, यू कैन टेक द एग्जांपल माय किड्स, माय वाइफ, माय पेरेंट्स, ऑल एवरीबॉडी इज यू कैन से लिविंग टुगेदर. तो हर रूम का अपना एक्सेस अलग होगा ना. नाउ टेल मी, can we give the access of bedroom to everybody or only it is allowed to me and my wife only? Yes or no? Yes or no? Yeah. So this whole room is just like a bungalow और यहाँ पे access. Now think about that. Kitchen is something like that. Who is allowed? You are allowed. Your wife is allowed. Your parents are allowed. Any guest will allowed to go to the kitchen? No. Yes or no? No.
तो आपका जो आपका क्लास होता है दैट इज समथिंग लाइक अ ग्रुप एंड स्ट्रक्चर। इसमें आप अपनी चीजों को क्या देते हो? एक्सेस। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से क्या देते हो? एक्सेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्राइवेट को भी स्टैटिक दे सकते हैं क्या हम लोग? प्राइवेट को भी स्टैटिक दे सकते हो, लेकिन कहाँ यूज करोगे? हाँ, क्लास के मतलब कोई अंदर, क्वेश्चन है ना? अब क्लास तो देखो मैंने क्या बोला, वेरी गुड क्वेश्चन, क्लैपिंग फॉर यू। आई एम रियली एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसका मतलब यू आर लर्निंग। नाउ द थिंग इज दैट, देखो बिल्कुल ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, दे आस्क द सेम वे। वो कभी आपसे, ट्रस्ट मी, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू वेरी वेरी बिग टॉपिक। वो आपके छोटी टॉपिक में कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं। देखो इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। स्टैटिक का मतलब मैंने बोला था, कभी अपनी मेथड्स, अपनी डेफिनेशन से डेविएट मत होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? शेयर्ड। तो आप ये बताओ, अगर मैं अपनी क्लास के अंदर ही 4 ऑब्जेक्ट बना दूं और सबके लिए कोई शेयर्ड चीज चाहिए, दैट आई विल बी स्टैटिक। यस और नो? केवल क्या होगा, उसको मैं बाहर से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा बस। यस और नो? इस एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब, प्राइवेट का मतलब क्या है? बाहर से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। यस और नो? यस। एंड यू वांट टू सी इट, जस्ट सी हियर। देखो यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे ये नहीं कर पा रहा हूँ? ये कर पा रहा हूँ? ये शेयर्ड ही तो है ना? यस और नो? इसको कर देते हैं प्राइवेट। क्या यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ? कर पा रहे हैं, यस। कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको बाहर करूंगा, बाहर तो रूल ही फेल हो गया। आउटसाइड स्टैटिक से पहले तो प्राइवेट एक्सेस ही नहीं होगा, स्टैटिक की तो बात ही नहीं आएगी। यस और नो? यस। Got the point? So that's why I'm saying that whenever you are learning the Java, always try to make a difference कि हर कीवर्ड की अपनी एक मीनिंग है, और उस मीनिंग को जब 2 मीनिंग एक साथ कंबाइन करते हो तो दोनों की इंडिविजुअल मीनिंग को कंबाइन करो। प्राइवेट का मतलब प्राइवेट है, स्टैटिक का मतलब स्टैटिक है। अगर कोई चीज प्राइवेट है तो उसका मतलब वो बाहर एक्सेस नहीं होगी, दैट्स इट। स्टैटिक का मीन्स है वो ऑब्जेक्ट में शेयर्ड है। तो अगर एक ही क्लास में, देखो मैंने अगर 2 ऑब्जेक्ट बना लिए तो क्या नहीं बना सकते? बना नहीं सकते क्या? यस और नो? तो दोनों में शेयर्ड हो जाएगी। यस और नो? Yes. So always try to keep the meaning. So you have learned today what you have learned, that access specifier you have learned, and you have also learned the concept of, you can say, static. अच्छा, एक चीज और दिखाते हैं। I will tell you about the function, लेकिन उससे पहले main is also a function. Yes or no? main भी क्या होता है? फंक्शन। Function है। अब आपको मैं एक जो टॉपिक बचा हुआ है वो बताता हूँ। I have told you about the object instant property. I have told you about the class property. और एक और होता है जिसको बोलते हैं local variable. अच्छा, इनको जो प्रॉपर्टी बोलते हैं, इनको साथ में क्या होता है? बिफोर प्रॉपर्टी इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल। वेरिएबल क्यों? क्योंकि देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? द वेरिएबल इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी। वेरी मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो? चेंज होती रहे। तो इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। इनको वेरिएबल्स ही बोलते हैं। बस वेरिएबल की एक स्पेशल कैटेगरी क्या हो गई? दिस इज अ ऑब्जेक्ट वेरिएबल, दिस इज अ क्लास वेरिएबल। चाहे प्रॉपर्टी बोल दो, चाहे वेरिएबल बोल दो। हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल। एंड व्हेन समथिंग इज डिफाइंड इन विद इन ए फंक्शन, अगर कोई चीज किसी फंक्शन के अंदर हो, फंक्शन में आपको बताऊंगा, फॉर द टाइमिंग यू कंसीडर मेन इज अ फंक्शन। तो अगर इसके अंदर मैं कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूं, जस्ट थिंक अबाउट दैट। इंट मैंने लिखा सपोज NAME, सो नाउ दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज ए लोकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल सिर्फ डिफरेंस ये होता है, if any variable is defined within any function, then this is known as local variable. And if the same variable, देखो इसी को मैं उठा के अगर बाहर रख दूं, सेम ऐसा देखना ध्यान से, now it will become instance variable, instance property. Getting my point? Yes or no? Yes. अगर कोई चीज क्लास के अंदर डायरेक्ट अवेलेबल है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं, क्लास के स्ट्रक्चर में डायरेक्ट अवेलेबल है, दैट इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अगर इसमें स्टैटिक लगा देंगे तो बन जाएगा क्लास, बट इफ इट इज अवेलेबल विद इन द फंक्शन, क्लास के अंदर है लेकिन साथ में किसी फंक्शन के अंदर भी है, देन इट इज नोन एज लोकल वेरिएबल। गेटिंग माय पॉइंट? या तो आपने भी देखा होता, ऐसी चीज होती है आपके घर में, लोकल वेरिएबल होता है, समथिंग दैट विल ऑलवेज विल बी विद इन योर हाउस। ऐसी चीज जो आप घर के बाहर यूज ही नहीं कर सकते, है ना? फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक वेरी वेरी स्ट्रिक्टली, लेकिन आपके घर में क्या है, अगर मैं किचन का एग्जांपल, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द एग्जांपल ऑफ किचन। आपके किचन में कोई चीज ऐसी होती है जो फिक्स होती है, ठीक है? जैसे चलिए किचन छोड़िए, आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर रूम। आपके रूम में एसी होता है, सो एसी इज समथिंग लाइक दैट। व्हाट इज दैट? दैट इज योर लोकल वन। यस और नो? आप एसी को अपने घर, अब ये मत बोल देना मुझसे कि प्रदीप मैं उसके स्क्रू निकालूंगा और बाहर ले किसी को दे दूंगा। सो आई एम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट don't go into the detail of that part. Try to understand the you can say what is my, you can say
what knowledge I want to convey. Are you getting my point? तो ऐसी चीज Yes. होती है. लेकिन if you take the example of car, अब कार का क्या है? कार is something like that you can use it outside. Yes or no? Yes. है ना? कार को देखो और लोग भी यूज कर लेंगे, कार को आपके फादर यूज कर सकते हैं, आपकी मदर, वाइफ, बच्चे सब यूज कर सकते हैं. तो इस इज समथिंग लाइक ए क्लास प्रॉपर्टी, एक क्लास की प्रॉपर्टी बन गई. लेकिन अगर मैं एसी की बात करूं, समथिंग दैट इज ओनली मान्या? within use within your room. Yes or no? Yes. So you got the difference. अब देखो क्या है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे you can see very very beautiful thing. I can keep the name at the class level and within the function that are same. लेकिन दोनों में differentiation हो जाता है. Otherwise क्या होता है, if I will try to give the same name, अगर मैं एक और प्रॉपर्टी बनाऊं same name से क्लास के अंदर, it will give the error because it is duplicate. Yes or no? आप ही Yes. बताओ, क्या आप अपनी क्लास में, आप अपने घर में, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टी हो और दोनों को सेम नाम दे सकते हो? मैंने फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन, ये मैं जानता हूँ रोल नंबर है, ठीक है, इसको मैंने रोल नंबर बोला, ये नेम है, लेकिन नाम क्या रख सकता हूँ? स्टूडेंट नेम का नाम स्टूडेंट रोल नंबर रख सकता हूँ. आई अंडरस्टैंड कि इसके अंदर मैं नेम स्टोर कर लूंगा, बट कैन आई गिव द सेम नेम? ये तो एम्बिगिटी हो जाएगी. यस और नो? Yes. तो आप कभी भी एक जगह पे एक नाम से दो चीजें नहीं रख सकते. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों रख पा रहे हैं? क्योंकि एक क्लास लेवल पे और एक, यस और नो? Function Function level. level. तो यहाँ पे लोकल है, लोकल की लाइफ लोकल के अंदर होती है. एंड वेरी वेरी फनी एग्जांपल बताता हूँ. इट इज समथिंग लाइक दैट. आप अगर इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए मान लो कि क्या है ये आपका, इसको इस दिस टाइम आई विल ट्राई टू कंपेयर द क्लास विद यू कैन से योर सोसाइटी. आपकी एक सोसाइटी क्लास, ठीक है, और ये फंक्शंस क्या है, छोटे छोटे क्या है, सबके फ्लैट है. तो हर फ्लैट में क्या एक नाम से एक आदमी नहीं रह सकता? कैन जस्ट थिंक अबाउट दैट. मैं अपने बेटे का नाम Yes. चिंटू रखूं, आई कैन गिव द नेम ऑफ माई सन चिंटू. आप अपने बेटे का नाम चिंटू रखो, प्रॉब्लम क्या है? रीजन इज दैट जब घर के अंदर बोलेंगे तो हम बोलेंगे चिंटू. सो इन माई केस माई चिंटू विल कम एंड इन योर केस योर चिंटू विल कम. लेकिन अगर मैं बाहर सोसाइटी में जाऊंगा तो क्या होगा? ये क्या होगा? कॉमन होगा. यस और नो? इसका मेरे लोकल से तो मतलब नहीं. अगर मैं बाहर आऊंगा तो प्रॉब्लम होगी. इसको मैंने बाहर आने नहीं दिया. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज Local variable. यू गॉट द पॉइंट. Yes. तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट. ओके, सो नाउ आई थिंक आई विल कवर द, सर हाँ, यस यस. तो अभी आपने समझाया, तो यहाँ पे अभी आपने जो नेम ऊपर लिखा है, मतलब क्लास के अंदर जो डिफाइन किया है, हाँ जी. तो इसका सिर्फ ये पर्पस हुआ ना कि यहाँ लिखने से ये सारी जगह एक्सेसिबल होगा, और जो मेन के अंदर लिखा हुआ है वो लोकल वेरिएबल है, तो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर. हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए तो एम्बिगिटी नहीं आती. एम्बिगिटी को क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिगिटी? एम्बिगिटी मतलब जहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, है ना? अब देखो, अगर मैं जब इस क्लास से, इस फंक्शन के बाहर इसकी विजिबिलिटी नहीं है, इस फंक्शन के बाहर इसकी क्या है? विजिबिलिटी नहीं है, इस वेरिएबल की. जो यूज हो रहा है इसके अंदर यूज हो रहा है, तो इसको कभी इससे डाउट ही नहीं होता है. लेकिन जब मैं एक ही जगह पे यूज कर रहा हूँ तो उसको क्या होता है? डाउट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिंक क्यों कर रहा है? ये blink कर रहा है. हाँ, नाउ इट इज ओके. सर, तो क्या ऐसे रिक्वायरमेंट हो सकता है कि जैसे यहाँ पे आप जो एग्जांपल से बता रहे हैं कि int हमने मतलब क्लास में भी डिफाइन किया है और फंक्शन में भी डिफाइन किया है, तो अगर यहाँ तो एक ही फंक्शन है, अभी बाकी फंक्शन होंगे जहाँ से क्लास को यूज कर रहे हैं, मतलब क्लास के int नेम जो क्लास वाला है वो यूज कर रहे हैं, सर मतलब क्या जरूरत है यहाँ पे दो? Sometime you can think about that, something like that. You can say for the class level you want to define a variable just for a property purpose like id. Is it okay? Yeah. अब यहाँ पे आपने क्या करता है? You are doing something. अब यहाँ पे internal level within the function you are trying to make some calculation, और यहाँ पे भी you need a variable जिसका नाम id होना चाहिए. Are you getting my point? कोई कैलकुलेशन कर रहे थे आप, तो यहाँ पे मीनिंगफुल रखने के लिए आप है, अदरवाइज यू आर फ्री टू चूज एनी अदर नेम. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट इफ यू ट्राई टू कीप द सेम नेम, इन दैट केस आल्सो इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. अदरवाइज तो आपके पास चॉइस है. वेरिएबल नेम कौन बनाता है? हम डिसाइड करते हैं, ऐसा नो? तो अगर मुझे करना भी होगा मैं क्या करूंगा? इसको रोल नंबर कर दूंगा, नहीं तो आईडी लिखने का तरीका आईडी कर दूंगा. यस और नो? बट फॉर द इंटरव्यू पर्पस समबडी आस्क यू कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, तब आपको ये थोड़ा बोलोगे, आप उसे क्या बोलोगे? नहीं 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 नहीं, मैं एक का नाम आईडी रखूंगा, एक का नाम आईडी. वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, आप मुझे बताओ रखा तो क्या होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So that's purpose I am telling you, if you try to keep the same name at the class level and within the function, both have different boundaries. Getting my point? Is it okay? Yes. Yes.
ठीक है, तो ये अदरवाइज तो रियल लाइफ में तो होता ही है। अच्छा बताओ, रियल लाइफ में तो मैंने एग्जांपल दिया, वो चिंटू वाला भी सेट नहीं है। आई टेल यू, अगर किसी पड़ोसी ने चिंटू नाम रख लिया ना, तो हम तो कसम खा लेंगे, सब रख लेंगे, लेकिन चिंटू नहीं, बिकॉज मेरे बेटे का नाम यूनिक होना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. यस और नो तो बोल दो। ओके ग्रेट। Yes, अच्छा yes. एक चीज sometime I'm trying to speak Hindi because few people are, so anybody who's not getting the Hindi sometimes, or everybody is good? Yes, sir. Good. Because in Good. some batches I have a problem. Few persons are from Bangalore and Hyderabad. So some people they say, Pradeep, when you say something in the end, you get the Hindi, they just go outside my mind. तो मैं उनसे बोलता हूँ, whenever try, if you have seen and if you have focused on my language, whatever I'm trying to speak in Hindi, same I speak in English. मैं repeat करता हूँ, yes or no? ठीक है, so that is another way, but it is not something like that I'm going to teach everything in Hindi or everything in English. I will try to basis English, and sometime if I feel that okay, I can make something Hindi and that will make the you can say session interesting, I will try to make it, but everything you will get in the English. Okay, so anybody have any doubts? No. No. Okay, so now the thing is that here I have covered this thing. Now I want to cover another topic that I'm not going to cover it today. Functions. Function हम करेंगे next. Is it okay? Yeah. Yes. Okay. Hey, okay. So हम function करेंगे next session में. And if you have any doubt, you can do one thing. You can make a revision on this. And same thing applies. I told you. Whenever I will move to the first second, third second, fourth second, fifth second, sixth second, you don't need to worry. In the sixth, you can ask the question from the first one. But the thing is that if you have really not revised due to some valid reason, ऐसा मत करना कि अपने लिए भी इकट्ठा कर लेना और मेरे लिए भी इकट्ठा कर लेना, वरना हर सेशन के बाद क्या होगा, पुराने सेशन रिकैप होंगे. So this facility is only given because sometimes will happen that you have released some important task, you have some critical release, you have some important work in house and you didn't get a chance. तो आपने क्या किया, next आपने उसको रिवाइज किया. But don't try to make it heavy. That is fair enough. My expectation is right or wrong? Yes. है ना? और ये आपके लिए अच्छा है, आप इकट्ठा करोगे एक दिन बहुत ज्यादा लगेगा. Otherwise, when you try to understand with me, trust me, within 5 and 6 lecture, you will feel it that Java is very, very easy when you try to understand with the help of memory. जब आप memory के help से एक concept समझोगे, trust me, उसके बाद ये function और ये सब चीजें कुछ नहीं होती है. Function बने किससे हैं? उसी के आगे public लिखा होता है, उसी के आगे data type लिखा होता है. That is the fact. Yes or no? अगर आप individual meaning समझ गए तो function समझना कोई बड़ी बात नहीं है. Trust me. Getting my point? Yes. So I'm binding the session. Please revise the things. I will try to upload this thing on the, you can say either in the Google Drive or in the YouTube, whichever will be, you can say available for me. Is it okay? Please revise the session. Please revise the session. Okay. So tomorrow class will be 10 a.m., right? Yeah. One news. Tomorrow class will not be there because I am out of station. So tomorrow class will be not. Okay. Okay. Okay, but the thing is that I will be connected on WhatsApp. If you are doing some practice, you can connect me on WhatsApp. I will try to connect. And the same time, if you want to make the you can say understanding on function, because we are going to cover in the next session. तो आप देखो क्या कर सकते हो. I will always try to motivate you कि आप में से अगर थोड़ा भी किसी को लगता है कि मैं थोड़ा proactive हूँ, so they can do one thing. यहाँ पे जो मैं सेशन पढ़ा है ना, ये सेशन 2, that is related to the functions. ठीक है, और नहीं तो you can go with this one. This is a specific live session on the function. Are you able to see this one? Yeah. Yes. तो आप इसमें से जो वीडियो हैं, जब भी आपको फ्री लगता है, whenever you are going to sleep, आप तो trust me, please do not watch any video. कोई भी आप कोई एक वीडियो देखोगे, फनी वीडियो ना, तो एक देखोगे, 2 देखोगे, 3 देखोगे, 4 देखोगे, लास्ट में आनी वही हंसी है और कुछ नहीं. ठीक है, और अगर ये 2 घंटे का वीडियो आप देख लोगे, ट्रस्ट मी, माय एवरी सेशन इज यूनिक. नाउ गो एंड चेक, आई कैन बेट ऑन दैट. आप मेरा कंप्लीट ऑटोमेशन सेशन ये देख लो, एंड यू कैन से फॉर लॉन्ग बैक आई हैव अपलोडेड दिस सेशन, class and object in Java, this one, and you can see a difference there. Getting my point? If you want to see the static, ये देखो static का session. Are you getting my point? So my every session is unique. Actually, my session is derived by you guys. Your understanding, your question derived that session. So every time you want to learn, try to explore my every session. Getting my point? So this whole YouTube you can. Okay, now tell me, who has not subscribed the channel? Everybody? Subscribe. Great. Okay, so now the thing is that whenever you are you doing something,
And if you really found that the video is also giving the good knowledge, so you can comment on that. Not for me, actually. The thing is that other person also just get a glimpse of that. Okay, really it is useful. Is it okay? Fair enough? Yes, sir. Okay. Yes. So okay, I'm binding the session for the day. Have a nice day, and you can connect me on WhatsApp. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Have a you. good day. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. Good day. Bye.